uterus 5.2 into 2.1 centimeter. Thin endometrium with small ovaries. Her secondary sexual characteristics are not developed. She gives history of withdrawal bleed on OCPs. What investigations will you carry out? What will be the management? What will be the possibility of the reproductive life, and how will you counsel her mother? आपने इनके जो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स जो थी उसमें यूट्रस स्मॉल है. Yes. अच्छा खैर इसमें क्वेश्चन ये था शुरू में कि an 18-year-old college student complains of नहीं sorry 18-year-old tall girl presented with primary amenorrhea. All members of family are tall stature. She gave history of withdrawal bleeding on OCPs. On examination, her secondary sexual characters. Thank you very much. On examination, her secondary 18-year tall girl. Primary amenorrhea. Tall girl इसमें खासतौर पे all members of her family are tall stature. On examination, her secondary sexual characters were not well developed, and her ultrasound showed a small uterus, 5.3 into 4.2 into 2.1 centimeter, with thin endometrium and small ovaries. What investigations should be carried out, and what will be her management? How will you counsel her mother regarding her reproductive capacity? There are three questions which have been asked in this after giving the features of the patient. One is, what investigations should be carried out? And second is, what is her management? And third is counseling her mother regarding reproductive capacity of this person. First of all, according to sorry, the important things to note, which need to be mentioned or clarified, is the tall stature of the person, one. Number two, primary amenorrhea. Number three, lack of development of secondary sexual characters. Number four, positive history of withdrawal bleeding on OCPs. And investigation में एक पहले ही आपको बता दी गई है, वो important है, and that is that the uterus is present, and withdrawal bleeding shows an intact reproductive tract. वो है, or there is no atresia. That means the uterus is small, the ovaries are small, and obviously, and of course, the endometrium is thick. So these are the facts. These are the investigations that I will carry out. First of all, I would like to do the karyotyping of the patient, and Karyotyping. Yes. Okay. For to detect any chromosomal abnormality. Chromosomal abnormality. Okay. Yes, sir. Karyotyping, what kind of chromosomal abnormalities will it tell? Sir, it will tell if there is any patient which is having if the patient is having Turner syndrome, if there is a Klinefelter syndrome. Does the description of this patient suggest Turner syndrome? Sir, the description of the patient most likely suggests mosaic Turner syndrome, in which there are mild. Mosaic Turner syndrome. Turner syndrome के क्या features? Sir, Turner syndrome mostly the features are there is web neck, there are stature. Short stature, yes, sir. Short stature, web neck. Yes, sir. The short stature, web neck. There are cardiac issues. Low set cubitus valgus. Yes, sir. Cubitus, low set ears and low set hairline, and there is altered bone development and lack of breast development, lack of secondary sexual characteristics, and secondary primary amenorrhea. इसमें से कौन सी चीज जो है वो उसके phenotype में set होती है? What is phenotype? So physical appearance. Physical appearance.
So does it appear to be Turner syndrome phenotype? No, sir, sir, phenotypically the patient appears to be Klinefelter, but according to her other features like primary amenorrhea, she had uterus is present, there are small ovaries, and the secondary sexual practices are not developed, sir. थोड़ा आहिस्ता चलो। Sir, the Turner is हाँ तो बिल्कुल इसे इत्तेफाक ही नहीं है, बड़ा simple straightforward इसका diagnosis है, किसी ने लिख भी दिया वैसे। Sir, the point was that I was confused in a little bit because the Turner is divided into monosomy X and mosaic Turner. In mosaic Turner, the features Obviously, are not. अगर आप Turner syndrome पढ़ोगे तो फिर आप Turner syndrome ही आपको बनाना लगेगा। वो आप शुरू कर दो उसके ऊपर। You tell me what happens at puberty? The secondary sexual characteristics. वो कैसे कैसे Pulsatile release of gonadotrophic hormone. जी हाँ कौन अनीसा मकसूद बोल रही हैं, बोलिए आप बताइए। Pulsatile release of gonadotrophin hormone. Release of, there is maturation, there are signals and I don't know what those signals are which make hypothalamus secrete gonadotropic signals, and then anterior pituitary starts secreting gonadotrophins. And when anterior pituitary starts secreting gonadotrophins, where do the gonadotrophins act? On the ovary. On the ovaries. Yes. And what happens to the ovaries under the influence of gonadotrophins? जी FSH LH होते हैं तो वो उस तरह से ovaries को stimulate करते हैं, right? Sir, the Klinefelter is a contraception. But sir, तो मैं तो कह रहा हूँ Klinefelter है लड़की, बच्चा मैं तो कह रहा हूँ उसका सिर्फ FSH LH करवाओ। Yes, sir, you mean differential था sir. पहले तुम FSH LH तो कराओ, differential investigation तो बताओ। So अगर ये कह सकते हैं कि तुमने बहुत जल्दी जंप कर लिया और Period है। अच्छा किसी ने कॉलमैन सिंड्रोम भी कहा। कॉलमैन सिंड्रोम में तो हिस्ट्री में कुछ पूछोगे आप? It's a sense of smell. Sense of a smell. हिस्ट्री में अगर आप हिस्ट्री में करोगे तो वो उस तरह से पूछोगे कि सेंस ऑफ olfactory वो। But in this patient, you see, I emphasized again so that you should take cue from that the patient is tall statured and it's a family trait, right? So Klinefelter syndrome को मैंने पहले ही doubtful बना दिया इसमें, मैंने नहीं बनाया था इसमें doubtful. Number one. Number two, important thing is that she had small ovaries or ultrasound there, but those were responsive to hormones, estrogen or responsive thing, which meant that the uterus is responsive, not insensitive, और वो है. So इसमें तो पहला diagnosis जो है वो FSH LH जो पहले तो FSH LH करना चाहिए, और अगर क्योंकि estradiol will be apparently वो कम होगा, उसकी वजह ये है कि चूंकि OCP से withdrawal bleeding हुई है, इसलिए उसकी मैं उतनी ज्यादा अहमियत नहीं समझता. I would expect estradiol to be lower. अब वो lower होगा, FSH lower होगा, LH lower होगा. तो मेरी diagnosis तो सीधी सीधी इसकी है. हाँ मैं तो अगर FSH LH low है, हाँ तो फिर क्या? So what is your diagnosis then? Hypogonadotrophic hypogonadism, because the ovaries are small for 18 years, right? Yes. The ovaries are small. Why are they small? They are infantile. Infantile ovaries अगर आपने देखी हो, बहुत कम लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि उस टाइम पे या या puberty से पहले आप उस तरह से नहीं करते. They are very small indeed, और वो होती है small, and then वो under the influence of FSH or LH वही जो gonadotrophin शुरू होती है, maturity of the system, hypothalamic pituitary system की development, और so इसमें अगर आप करोगे तो पहली चीज तो वो करोगे कि FSH LH करवाओ, वो comparatively simpler है, और दूसरी अगर वो normal range में आती है तो फिर आप दूसरी तरफ जाओगे जिसमें कि वो वाली चीज आती है. Now that would actually, in my opinion, that would clinch the diagnosis that this is it, and according to that, now let's consider that this is
person who has a hypogonadotrophic hypogonadism. So what are you going to उसकी management क्या होगी इस time? Sir, we can counsel. What are the objectives of management? Now we have diagnosed that this is a patient of hypogonadotrophic hypogonadism at 18 years of age, unmarried college student. What are the objectives of treatment at this time? Hormone replacement therapy. Many objectives पूछा है. Yes, sir. What are the objectives? Uh, So you concentrate on the question. I haven't asked you what treatment will you give. I have asked you what are the objectives of treatment. And you also try to assess that what are the issues of this girl and what should you be thinking of. Objective उसी से derive होंगे ना कि क्या जरूरत है. Sir, our objective is to the development of her secondary sexual characteristic to treat her primary amenorrhea, so she can get a regular menstrual cycle. To treat her future concerns regarding the infertility and Reproduction. reproduction, Not infertility, reproduction. reproduction, and वो आपने उसकी माँ को बताना है बाद में, लेकिन अभी पहले आपने objective बता दिया. That is main objective is development of secondary sexual characters to give her that confidence of gender identity. वो आप उसको उस तरीके से वो देंगे. जी ये राबिया फजल जो है उन्होंने लिखा है reach diagnosis, counseling and then manage accordingly to build ये secondary sexual characters and to bring menses. Yeah, menses जो है वो that is something that you can, that's a secondary outcome of that. That is important psychologically for the patient. तो वो आ जाना वो ठीक है. But the important thing first is obviously secondary sexual characters. तो वो है. So in this patient, how will you counsel the patient? Now counsel the patient and the mother. What are the points that you will? Yeah, आप सारे all those who are listening or they are joining us virtually, they need to write down the points that you want to counsel the patient and her mother about. Counseling for HRT as these are at risk of osteoporosis. ये बाद की बात है osteopenia और osteoporosis. Nasia, HRT is not the right term to use over here. Hormone therapy I would not say HRT. इसको hormone therapy बोलते हैं HT. अगर ये premature ovarian, अगर आप HRT कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि in your mind you have diagnosed premature ovarian failure, and this is not our diagnosis. So premature ovarian failure है, फिर HRT बनता है, इसमें नहीं बनता. चलिए ये आप अपने अपने पॉइंट्स लिखिए. आपने काउंसलिंग में क्या करना है आप मुझे बताओ जी. काउंसलिंग में क्या करना है? अगर 3 केस डिस्कस करना है 20 मिनट तो होगा. काउंसलिंग में जो इस किसी भी काउंसलिंग में है, डॉक्टर बीना ने बड़ा एक डिटेल्ड लेक्चर लिया था 2 हफ्ते पहले अबाउट काउंसलिंग. I would want everyone to go back to that and identify the areas that you would want to focus in this particular patient. Now, one counseling is explanation of the diagnosis of the patient to the patient and of course our mother. Number 1, वो तो आपने explain करना. Number 2, the whole situation and the implication of that diagnosis. वो number 3 पे आएगा फिर कि the kind of treatment that will be provided. Number 4, the likelihood of that treatment to be a kind of permanent treatment or continuous treatment which the patient will have to take. Next, regarding reproductive function, more reproductive function के लिए again that is to be told in a positive fashion that the reproductive function will be activated by medication. It will be, it is kind of, it appears to be a little expensive procedure, but we may not bring in expenses right at this time, but we'll say that the treatment for reproductive function is available
is possible, and it will be carried out at the appropriate time. That reproductive capacity is present, and that can be stimulated. I agree with you. I was just reading absent secondary sexual characteristics. I thought that they were underdeveloped. lack of development. मतलब the underdeveloped है इसका मतलब है कि breast development है but it is in early stages 10 or 1 year to go. So उसके अंदर that is the reason that she will need hormones to build up those secondary sexual characteristics. Aiza, Anisa, Naz, Sufyan, Mahmood, आप सब ने relevant point, implications in life, objective of treatment, sensitive issue, counseling for diagnosis. Very nice. Counseling regarding phenotype, she is female, having ovary, and that's reassuring. But absence of secondary, that's very good. Female need of medical treatment for secondary regarding diagnosis, and then its impacts like physical development, cognitive development, and social development, fertility issues, chances of transmission, psychological counseling. Nazia ने बहुत अच्छा लिखा है. Nazia, you've written very well. Good, very nice. Good approach. Good. अच्छा अब इसमें just a few words about अब actually करना क्या? हाँ अभी आप क्या करोगे? What kind of hormones will you give? What treatment will you? Pharmacological treatment क्या होगी? So estrogen replacement therapy, and we will give her withdrawal bleed every month with progestin. ये मतलब segmented सा आंसर है आपका कि estrogen treatment, estrogen replacement treatment, and वो क्या करोगे इसमें जब भी आप हार्मोन दो during reproductive years, particular reproductive years का वैसे ही so long as एक basic rule है जिससे आप शुरू करते हो कि so long as the uterus is in the body, and if you are to give sex hormones to the person, then you give them in a cyclical fashion until and unless कोई short duration के लिए देना हो. तो एक तो ये cyclical fashion में दोगे. Secondly, उसमें combination, some form of combination, so that you do not continue to give unopposed estrogens for a longer period of time. ठीक? So ये है basic principles. But अब initially couple of months to दे सकते हैं. हाँ, मैंने longer time मैंने कहा. So ये पहले तो ये है कि पहले तो है principles of sex hormone treatment, pharmacological treatment, कि वो ये principles हैं. Then you tailor to that treatment to the need of the patient. हमने Premarin भी कहा, estradiol की भी preparations available हैं. आजकल उधर short supply में थी, जैसे Prof वो ethinyl estradiol है, and then you can also give ethinyl estradiol in the form of contraceptive, combined contraceptive pill. So in this patient, for secondary sexual characters, she needs estrogens, and also to counteract that, progesterone, which also will help the development of secondary sexual characters. तो शुरू में अगर आप कुछ महीनों के लिए अगर आप continuously भी दे देंगे estradiol treatment दे देंगे तो वो जिस तरह से डॉक्टर बीना ने कहा तो वो ठीक है. She has got a thin endometrium. So if we give her estrogen alone for a couple of months and keep on monitoring by ultrasound endometrial thickness, she should be given estrogen alone for a couple of months. I would say I'm just being random, मेरे कोड ना करना, लेकिन 6 महीने तक भी आप दे सकते हैं. And then once you feel that some breast development has started taking place, then you can put her on estrogen progesterone therapy. क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप continuous नहीं देंगे, आप उसे देते हैं break कर करके with progesterone और withdrawal bleeding करा के, तो फिर breast development उस तरीके से it will not take place. क्योंकि once the periods start regularly, what happens to the breast development? It actually stops. Only the fat is increased, nothing else is changed. So for the breast development, she has to have estrogen alone for some months. I agree with Dr. Rubina in this कि आप उनको बताएं और वो उनको बता भी दें कि अभी हम जिस तरह से ये दे रहे हैं, the purpose and objective of this is development of breasts, और उसके बाद फिर जब cyclically आके देंगे तो वो periods भी return कर लेंगे, वो हो जाएंगे. फिर ये तो हो गया कि जी फिर उसके बाद आप उनको combined contraceptive pill Formula 28 is eminently suitable for this, और वो उनको reassure करें कि ये जरूरी है, लेते रहना जरूरी है for her health. वो health के लिए
उसके बेनिफिट्स जो हैं फिर आपको पता होने चाहिए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वो जो फोन और ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेट्रा कहा था तो वो उसके साथ हो गया. It is the more important part here. When we give these girls cyclical estrogen progesterone, maybe for 6 months to a year or maybe longer, sometimes when you stop it, the natural cycle resumes. Even in these girls of hypogonadotrophic hypogonadism, so उनके अंदर fertility issue तो फिर रहता ही नहीं. Fertility issue उसमें होगा जो सिर्फ withdrawal bleeding पे चले जा रहे हैं. So most of these girls will actually ultimately resume their own cycle, and they would not have issues with fertility, or they can be dealt with as they arise. When she gets married, she should be asked to come back and see. But in those girls where fertility is not resumed, over there you will continue to provide the hormonal treatment, and obviously you will monitor the FSH and FH. अच्छा प्रोफेसर आपने कहा आइदर ओवर डोनेशन. अभी ओवर डोनेशन की बात नहीं हुई क्योंकि अभी तो वो वी आर बैंकिंग अपॉन दिस कि वो हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म अगर है तो when the stage comes for the fertility to address fertility, then the management would be that of course the woman would be having this hormone therapy which would be sustaining and making endometrium develop, and she would be having regular withdrawal bleeding cycles. Then you stimulate the ovaries through gonadotrophins. You give gonadotrophins, which naturally are absent because of lack of stimulation of anterior pituitary. So you will give FSH purified or HMG दे सकते हो, purified दे सकते हो, और वो जो बनाते हैं recombinant FSH. Recombinant FSH. So वो आप दोगे to stimulate the ovaries, और वो जिस तरह से आप उसके लिए ovarian stimulation cycle होता है तो वो उस तरीके से. मैं नाज़िया के 2-3 questions का जवाब दे दूं. नाज़िया, patch is not a good choice for Pakistan where there is a lot of humidity and your estradiol will not be effective. So why not give her either Premarin or Propanova जैसे कि सर ने कहा था, वो ज़्यादा बेहतर है. 1 BD dose में आप दे सकते हैं. जहाँ तक ताल्लुक है IVF का, IVF will not be a choice for every one of these girls. नहीं, IVF की जरूरत नहीं है ना, so long as वो चलता है. हाँ, आप IVF को कह सकते हो इसलिए to enhance the outcome and chance of pregnancy in that particular cycle. The reason, if one would let it be on its own, because she'll require investigations regarding tubal patency and the rest of it, and if everything is okay, then you can give her gonadotrophins and monitor, and then timed intercourse according to the follicular development. Now, IVF would become even more expensive. Stimulation of ovaries with gonadotrophins is an expensive proposition, but IVF is would minimally double the expenses of that. Now, one advantage, as you have rightly suggested, of that would be that the chances of success of treatment would be enhanced through IVF, because if the chance of pregnancy in a natural cycle or with natural intercourse would be say about 15%, by IVF you can almost double it or more than double that by 30 to 40% depending upon the facility which is available. So that is something which then can be suggested at that time. So stimulation of ovaries through gonadotrophins and then timed intercourse with that after monitoring, or then you can also suggest IVF and so on and so forth. How long we wait for now? Well, I will not really depend upon natural cycle to resume. Only if it does, well and good, but you can give a break after a couple of years and see if there is any likelihood of natural cycle, and if it is, cost effective, cost issue is there. Cost issue absolutely is there, but that is the only way. उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा सकता है कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए. वैसे भी OCP इसकी तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी, आप ये what investigations are to be done, please write it like that. ये रोमन उर्दू मत लिखिए इसमें,
OCP duration. OCP she can have till the natural age of menopause, because she must be given that advantage of hormonal support for its beneficial effect on cardiovascular system, as well as bone sparing effect, so that she is not exposed to the possibility of osteoporosis. These are the two main non-sexual, non-reproductive benefits of hormones, female hormones. MRI brain की जरूरत? I don't think so. No, it is not a pituitary adenoma वो जो कि cause कर रहा है. मैं इसलिए इनको वो तो इसमें तो वो anterior pituitary की lack of production है. All men present with MRI brain. All men ये क्यों है? What is there to support all? चलो जी, मेरा ख्याल आधा घंटे से ज्यादा हो गया. और भी सवाल होंगे, लेकिन आप सवाल जो भी सवाल आपके, और the purpose of this exercise is not to answer all the questions or all the aspects. We can continue discussion for the whole day, but the important thing is to stimulate thought process and to further enhance curiosity, so you can go back and you find out for yourself many of the answers, many of the questions which would arise inevitably in your minds. There are many questions of which I do not have an answer to, but simply put it like this, I would manage this patient in this particular fashion. चलें जी, यार कैसे आपका जरा ऊंचा और वो जो growth hormone वाला पूछा था ना, growth hormone should be prescribed by an endocrine specialist, not by an endocrine. growth hormone की जरूरत मेरे ख्याल में मेरा नहीं है. नहीं ख्याल से अगर pan hypopituitarism हो तो that's a different thing, then you have to do a lot of other things also. ये मैं एक आपको दिखाऊंगा स्लाइड एंड में. Differential scale. जी, Differential. मैंने कहा ना कि इसको आप सारा दिन डिस्कस कर सकते हो. हम we are not discussing primary amenorrhea, we are discussing, this is a case discussion, remember that. वैसे तो मैंने तो देखा नहीं है के बारे में बता दें. हाँ? Your journey towards success was very interesting. Anisa. अच्छा, वो फिर कभी Anisa, मैं thank you करती हूँ. हाँ चलो, हाँ थैंक यू वेरी मच. अभी तो सक्सेस मैंने बताई नहीं थी तुम लोगों को, सक्सेस तक पहुंचे नहीं. ये इंटरेस्टिंग, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है. ये मैंने आज इसके बाद तुम लोगों को एक और इसमें सबक, हाँ नहीं मैं आपको थोड़ा सा let's say मैं I will tell you something that's not, I was involved in that, but I want to tell you something which is absolutely actually बड़ा lesson है. This is about Dr. Rashid. I can speak about Dr. Rashid much more than I can speak about myself, and I can speak endlessly for the whole day. There is one aspect that I would want to tell you about IVF in Pakistan. ये मैं सिर्फ 5 मिनट जब हो जाए मुझे बता देना बच्चा मैं पास करता हूँ. Dr. Rashid ने 83 नवंबर में he went to Karachi for a meeting. वहाँ पे वो एक एग्जामिनर ने वो एग्जामिनेशन के लिए गए थे. उन्होंने घर पे खाने के लिए बुलाया. घर बुला के कहने लगी कि मैं तो परसों मेलबर्न जा रही हूँ. उन्होंने कहा मेलबर्न क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी वहाँ IVF, परसों नहीं, उन्होंने कहा वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद. उन्होंने कहा वहाँ पे IVF की एक वर्कशॉप हो रही है. वर्कशॉप ये 1983 का वाक़या है, और 1978 में the first IVF baby of the world was born in Louis France. तो राशिद ने उधर उसी वक्त सोचा ना, दिस इज इसी के लेना और फिर डिसीजन करना. इन्होंने उसी वक्त डिसीजन किया, और उस वक्त वीजा वगैरह की आसानी थी वगैरह वगैरह. इन्होंने बुकिंग करवा ली 2 हफ्ते बाद की, और ये मेलबर्न पहुंच गए और जाके अपने आप को उन्होंने रजिस्टर करवाया. डॉक्टर राशिद को अभी तक ईमेल करनी नहीं आती वैसे इस वक्त तक, लेकिन वो 2 हफ्ते में टाइम पे मेलबर्न पहुंच गए, रजिस्टर करवा के अपने आप को उस वर्कशॉप में, और उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड की. वो जिस एग्जामिनर ने कहा था कि वो जा रही हैं, वो 3 दिन बाद में पहुंची थी. इन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड की नवंबर 1983 में, और अप्रैल 1984 में द सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड. वो उधर हमने ये मुझे हमने भी उससे उन्होंने शामिल बनाया, तो उन्होंने मुझे शामिल कर लिया था. ये
जिमखाना क्लब के सामने ना अपोजिट, वहां पे एक घर किराए पे लिया, उसमें बड़ा जबरदस्त उसका फर्स्ट क्लास उसका कंसल्टेशन ऑफिसेस बनाए, लैब में वगैरह वगैरह, सारा इक्विपमेंट बना लिया। एंड देन वी इनवाइटेड a doctor from King's College who was involved in IVF. उन्होंने आगे हमें कुछ समझाया दिया। 1984 अप्रैल, लगे रहे कुछ नहीं हुआ। हम लैप्रोस्कोपिकली एग पिकअप करते थे, या वो एग पिकअप होता था अल्ट्रासाउंड गाइडेड, लेकिन वो ब्लैडर के थ्रू जाते थे एब्डोमिनली। उस वक्त तक वेजाइनल प्रोब नहीं बना था। उसके बाद वेजाइनल प्रोब ये कुछ ना हुआ, 2-3 साल वहां रहे। 86 में हम फिर यहाँ पे ये जो बिल्डिंग अभी करा दी है जहाँ पे कार पार्क है, वहाँ पे एक डॉक्टर राशिद के वो एक ब्रदर लॉ का घर था, वो किराए पे लिया, उसमें नीचे लैब बनाई, थिएटर बनाया वगैरह, वहां पे शुरू किया। सो 86 में यहाँ पे आ गए। 87 में पहली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ, वो था वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सलीमा अकील उस पेशेंट का नाम। और लेकिन हर हफ्ते हम हर ट्यूसडे को डॉक्टर राशिद के घर में हम डिनर करते। डॉक्टर राशिद, एक डॉक्टर कमर जमान थे, मैं और साकिब की शाम था, तो हम चारों मिलके वो जो भी लिटरेचर होना, फर्टिलिटी स्टडी जर्नल हमने लगवाया हुआ था, वो बैठ के हम डिस्कस करते और कि ये करें वो करें, इस तरह से हम अंधेरे में तीर मारते रहते थे। तो और डॉक्टर कमर जमान ने कहना शुरू कर दिया कि ये तुम लोगों ने इतना महंगा इक्विपमेंट मंगवा लिया, ये कर रहे हो, बना रहे हो, तो ये तो चलना नहीं है, और तुम्हारे सिर्फ ये एयर कंडीशनर 4-5 लगाए हुए यही बिकेंगे, तुम्हारे कुछ नहीं बचना इसका। खैर लगे रहे। 88 में फिर मैं और वो जो हमारे थे लैब में काम करने वाले, हम गए, हमने कुछ अर्सा गुजारा। मैंने स्वीडन गया और फिर मैंने गया किंग्स कॉलेज, वहां में हमने कुछ टाइम गुजारा, देखा कि करते कैसे हैं। फिर हम, और उस वक्त हमने एक वेजाइनल प्रोब वाली मशीन अल्ट्रासाउंड की वो भी खरीदी, फिर किया। और उसके बाद फिर 1989 में हमारे जो पहले 7 केसेस हमने वो जो किए थे, उसमें से 5 प्रेगनेंसीज हुई, 5 बच्चे हुए। और 89 में फिर वो 6 जुलाई को वो पहला सिजेरियन सेक्शन करके तो वो पहला बच्चा है। अब इसमें बात ये है 84 में शुरू हुआ, इसी टू मेक, अब जो पॉइंट है इसमें देखने वाले, टू मेक अ डिसीजन। 1983 में उन्होंने कहा, एंड इट वाज अ बिग डिसीजन टू गो टू ऑस्ट्रेलिया टू अटेंड अ वर्कशॉप। देन 84 में आगे बना के विद इन 5 मंथ्स बना के सेंटर एस्टैब्लिश कर लेना। उन्होंने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पैसे कुछ अपने डाले, कुछ अपने दोस्तों को डाले, डाल के वो सेंटर बनाया, इक्विपमेंट खरीदा, टीम बनाई, मुझे शामिल कर। ये और ये जो पहली प्रेगनेंसी जो भी होती थी उसमें ना डॉक्टर राशिद ने उनको मॉनिटर किया था, ना उनकी वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में शामिल थे, ना काउंसलिंग में शामिल थे, ना उन्होंने एग पिकअप किया, ना उन्होंने लेबोरेटरी का काम किया, ना उन्होंने एम्ब्रियो रिप्लेसमेंट की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया सारा कुछ। पर असल क्रेडिट किसको जाता है? जिसने ये सारा कुछ एस्टैब्लिश किया, जिसने बनाया, जिसने टीम बनाई। तो उन्होंने टीम बना के उसकी ट्रेनिंग, उसको वो सारा कुछ वो करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 84 में शुरू किया और 88 में जाके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ, इंट्रायूट्राइन। 89 में डिलीवरी हुई, 88 में पॉजिटिव। 4 साल तक लगे रहना उस एक्सपेंसिव प्रोसीजर पे, और उसको हिम्मत ना हार किसी, दैट इज दी। और फिर उसमें ये नहीं है कि अंधे हो के लगे रहो, एक ही चीज को, गलती को रिपीट करते रहो, उसमें इम्प्रूवमेंट्स, ट्रेनिंग, ये वो देखते रहना। तो एक है एक ग्रिट, इसमें GRIT, ग्रिट। यू शुड हैव दैट, यू शुड हैव एक तो है एक the ability to make a decision, the correct decision. Number 2, start acting on that. Act, decision करके बैठे रहना कोई नहीं, act. नंबर 3 है परसिवियरेंस, कंटिन्यू उस पे अपना गोल ऑब्जेक्टिव सामने रख के आप परसिवियर करो, कोशिश करते रहो, अंधाधुंध नहीं, अक्लमंदी से देखते हुए। मैं उसको एम्फसाइज करूंगा, ये करते जाओ ये। और फिर टीम वर्क, डेलीगेट। ये नहीं कि सिर्फ नाम उनका हुआ, सितारा इम्तियाज उनको मिला, उन्होंने नहीं किया था, मैंने किया था।
लेकिन मैंने क्यों किया? He could do that. IVF करना जो है, जो क्लिनिकल काम है उसका बड़ा सिंपल है, anybody can do it, even a non-doctor can do it. वो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस सारी चीज को इकट्ठा करना मुश्किल है, उस सारी चीज को उस तरह टीम बनाना, डेलीगेट करना, वो जो उसका जो भी उसका फायदा होता है या जो उसको शेयर करना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखना। तो ये वाली चीजें हैं। ये जब हम बात करते हैं अपनी पहले या अपने वाकयात की या उस चीज की जिस तरह से वो था कि क्या उसमें से लर्न किया, दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट एंड दैट्स व्हाई the purpose of that presentation was not to project myself, I don't have to, but it was to convey to my younger colleagues और वो उनको अगली नस्ल को ये बताना कि अगर मैंने उस तरह से उस चीज का फायदा नहीं उठाया तो अगर किसी ने उठाया या किसी का एग्जांपल देके या इस तरीके से, so you don't have to start it all over again और struggle में से जाओ उस तरह से करो, you can find other ways and means, but these are the qualities that you need to develop, you need to polish, you need to sharpen them and act on them. चलो जी दूसरा केस लिखो सारी चीजें आपने चले जी। वो टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने बताया ही नहीं, मुझे 7 मिनट हो गए। चलो बच्चा 36 years old, para 2 plus 0, previous to सर हमें मजा आ रहा था आपकी बातें सुनने में। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अगली दफा एक कुछ और बताऊंगा फिर। हाँ जी। Her first baby is autistic. She has a second baby girl with pancreatitis who is 6 years old, presented with excessive abnormal bleeding. सर आवाज नहीं आ रही है। ये मैं बोल देता हूँ, आपके पास कोई जानते हो? मैं चीख जो रहा हूँ। माइक होना चाहिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? ये हर दफा मुझे यस सर आ रही है। हाँ, वो जब नहीं आ रही, अच्छा तुम उधर और पास बैठ जाओ, उधर पहले और जरा ऊंचे बोलो। शाबाश। 36 years old, para 2 plus 0, previous to C-section. Her आज देखो मैमिश थोड़ा सी इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी है कि दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड। 36 year old, para 2 plus 0, both cesarean section. हाँ जी। Her first baby is autistic. She has a second baby girl with pancreatitis who is 6 years old. Presented with excessive abnormal bleeding. On ultrasound, her uterus had multiple fibroids and uterine cavity is distorted. What will be her plan of management? दोबारा से दो बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। शी इज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ हार्टएक and now she has presented with excessive abnormal uterine bleeding. On examination, uterus is enlarged, palpable. Ultrasound shows multiple fibroids distorting the uterine cavity. तो उसलिए अब क्या करना है? 36 years age है। But what will be the plan of her management? So first, I will take the detailed history. Heavy menstrual bleeding means last menstrual period, bleeding duration, regularity, how much bad soap per day, history of passage of clots, and how they impact on life, and ask about the associated symptoms, dysmenorrhea, pain or heaviness. Pressure symptoms include constipation, urinary retention, and she does the anemia include easy fatigability, tiredness, palpitation, and history of malignancy include weight loss, anorexia, jaundice, headache, chest pain, hemoptysis. In all history, ask about any mentioned fibroid in previous operation notes, any complication like postpartum hemorrhage in previous cesarean section, and in past history, ask about any treatment of previous complication and long-term use, long-term intake of any anticoagulant. एक मिनट तो देखो बात यह है कि जब आपने बोलना है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप मोनोटोन में, मोनोटोन का मतलब होता है एक ही
लेवल ऑफ वॉइस हो, ना उसमें उतार हो, ना चढ़ाव हो, ना पता चले कि आपका फिक्रा शुरू कब हो रहा है और ना पता चले कि फिक्रा खत्म कब हो रहा है। जब आप बोलते हैं तो उसमें आपके सेंटेंस में कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, ये चीजों का एहसास होना चाहिए। यू डोंट स्पीक फुल स्टॉप, कॉमा, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने के अंदाज से ये होना चाहिए। सो उसमें आपको पता चले, बिकॉज जब आप मोनोटोन में बोल रहे होगे तो हर कोई अपना इंटरेस्ट जो है, और एग्जामिनर जो होता है वो बार बार सुन के उसका तो इंटरेस्ट सबसे कम होता है। सो टू हैव द एग्जामिनर्स इंटरेस्ट and to make sure that whatever you speak, that the examiner not only hears but listens and it is registered with the examiner. It is important. So Mavish, you are such a nice girl, beta. आप ये चीज जो है उसको उस तरीके से आप बोलोगे कि ये आप जो जो चीज आप बोल रहे हो वो उसको पता होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आपने अब मुझे जरा उसके पॉइंट्स बताओ कि आपने मैनेजमेंट प्लान में क्या आपने प्लान किया है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। यू आर एट अ टॉप स्टेशन, द टोटल टाइम दैट यू विल हैव आफ्टर रीडिंग योर स्टेशन विल बी अराउंड 10 मिनट्स। उस 10 मिनट्स के अंदर आपने पूरी मैनेजमेंट प्लान एग्जामिनर के साथ डिस्कस करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू स्पीक फॉर 2 or 3 minutes regarding only evaluation, you would have wasted a lot of time. What do you want to know in your patient? You want to know her menstrual history detail. And the second thing that you should want to know is the effect of bleeding on her, which is anemia. And the third thing you should want to know is her fertility desire. That's it. ये 3 सवाल आपके हैं। इन 3 सवालों की जो डिटेल बनानी है बना लो। Then go on immediately to investigation so that you can investigate. Once you have done the evaluation, क्योंकि evaluation में उसकी history और investigation आएगी, then you talk about counseling or talking to the patient and making a decision regarding the management plan, and then you talk about management and then the future fertility desire. ये तुम्हारा टोटल आउटलाइन है ऑफ योर आंसर। अब इस आउटलाइन के अंदर तुम करके जरा सबसे बताओ ताकि तुम टाइम इतना ना लो, एंड यू मस्ट ऑलवेज लीव टाइम फॉर द एग्जामिनर टू आस्क यू क्वेश्चंस। आपने ये नहीं करना कि आपने बोलना शुरू कर दिया, एग्जामिनर सुनता रहेगा और फिर बच जाएगी और तुम चले जाओगे। It is going to be a two-way communication. So your answer should be crisp and precise. अब वो खत्म हो जाना मैम। मैम इसमें हम डिस्मेनोरिया का नहीं पूछेंगे पेशेंट से, और पेशेंट का एग्जामिनेशन भी पूछेंगे। That's a part of the gynecological history. जरूर पूछें। और मैडम एग्जामिनेशन का भी मेंशन करेंगे कि आफ्टर हिस्ट्री में एग्जामिनेशन आई विल परफॉर्म द एग्जामिनेशन पर abdominal एग्जाम, और मैम देन पर vaginal एग्जामिनेशन एंड देन आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस, राइट मैम? हाँ, लेकिन आप उसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि abdominal या pelvic, आप ये कहेंगे कि on examination I will assess the size of the uterus, the regularity of the uterus, the presence of any, कोई भी आप PS के ऊपर polyp देखना चाहते हैं, कुछ और है, the presence of that, and that's it. That's what you're reading your examination. तो आपको examination में जो information चाहिए वो आप बताएं, हो सकता है वो information आपको examiner दे। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अगर उन्होंने मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हमें ऑलरेडी दे दिए हैं तो इट मींस हम इसको पाम पॉइंट के लाइन पे नहीं चलाएंगे ना। पाम पॉइंट तो हमने डायग्नोसिस करने के लिए सब कुछ पूछना होता है ना। जब उन्होंने आपको बता दिया, हाँ जी, जब उन्होंने मल्टीपल फाइब्रॉइड कह दिया तो हम सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनीमिया और वहां तक रहे और पाम पॉइंट की पूरी लाइन को ना फॉलो करें। So what you can say is वो जो एग्जामिनेशन के लिए बात हो रही थी, आप कहेंगे कि चूंकि आपको ऑलरेडी फाइंडिंग्स पता है तो आपको एग्जामिनेशन अगर आप नहीं भी मेंशन करोगे तो एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहो उसमें कोई हर्ज नहीं, बट पाम पॉइंट नहीं बनती क्योंकि वो तो डिसीजन हो चुका है that the cause of bleeding is fibroids। जी जल्दी से पहले तो first I will take the detailed history about gynecological last menstrual period, bleeding regularity, how it felt so per day, how history of passage of clothes, and how the effect of on man, and ask about the test just the anemia, like irritability, tiredness, palpitation, and examination on abdominal examination and fertility desire।
सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी नहीं आ रही, मेरी तो आ रही है। तुम उधर करो स्मार्ट सर ये जो बोल रही है ना वो इंटरप्ट हो रही है आवाज, और फिर जुमला पूरा सुनाई नहीं दे रहा। चल काफी ऊंचा बोल। Then on examination, on abdominal examination, uterus is uterus is enlarged, irregularly enlarged बच्चा जब multiple fibroids जी होते सर, हैं uterus is in, irregularly, and आप जब देखोगे on examination the uterus is palpable. Number one, yes. because the uterus has to be of the size that occasionally palpable है, right? An irregular firm mass is palpable in the lower part of the abdomen, which is that enlarged uterus, and ultrasound shows confirms that diagnosis, and there are multiple fibroids. Okay, so the uterus is 14 week size and it is irregularly large, which has been confirmed by ultrasound. अब आप उसके आगे चलें, what other investigations do you want to do? Blood count to check the hemoglobin level and blood grouping and baseline investigation. इसमें हाँ देखो, इसमें तो आप हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, हम कहेंगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ तो आप भी जाएं। इसमें आप बोलोगे इन्वेस्टिगेशन, आपके पास जो उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि थोड़ा टाइम है आपके लिए, हम ऑडियंस में से क्यों नहीं पूछते कुछ लोग? हाँ जी, The audience would like to say what ये investigation. सुफियान में मोहम्मद है, इन्होंने कहा हिस्ट्री रिगार्डिंग menstrual cycle, quality of life affected, pressure symptoms, fertility desire, previous treatment taken, examination regarding abdominal, vaginal और investigation baseline, RFT, LFT. अच्छा अब इसमें आप देखो, इसमें अगर shorter time है तो आप वो anesthesia वाली investigation essentially नहीं करोगे। दूसरी बात ये कि RFT और LFT कितनी उम्र है हमारी पेशेंट? 36-year-old does not need RFT and LFT. This is wrong interpretation. ये ना बताएं। Viral marker baseline में आते हैं। देखो पास ये सर बेसिक हेल्थ ये बेस MBBS वाली, आप एक 10 मिनट आपने डिस्कस करना है, आपने बताना है कि ये ट्रीटमेंट क्या करनी है। If I were you, I will say I will do baseline investigation, जो कि अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो पूछ लेगा, उसमें आपके वायरल मार्कर सब कुछ आ जाता है। For this particular case, CBC, serum ferritin, ultrasound, ये तीन चीजें जो लेकिन आप कहोगे baseline investigation। अब देखो हम इसमें हम ये टाइप कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं है, आपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करके आपने ट्रीटमेंट बतानी है, उसमें फिर एग्जामिनर देन विल गेट बैक टू यू कि अच्छा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बताओ, फिर फ्ला बताओ, अगर ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। और इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात वो उन्होंने लिखी थी सुफियान ने और डॉक्टर रुबीना ने उससे पहले बोली थी, वो है ये फर्टिलिटी डिजायर ऑफ दिस पेशेंट कि जी वो क्या है, बिकॉज शी हैज हैड सच डिसअपॉइंटमेंट्स and it is because अगर तो let's say कि this is a case with primary infertility जिसका पहले कोई है ही नहीं है, बच्चे कोई नहीं, 36 उसकी 2 साल पहले शादी हुई है, she is a career person, उसने पहले PhD कर ली है, MSc PhD कर ली केमिस्ट्री में और अब उसने शादी की है और ये उसके फाइब्रॉइड है। एक वो पेशेंट है, उसमें क्या करोगे? उसमें ऑब्वियसली वो पेशेंट जो है फर्टिलिटी उसकी डिजायर है तो उसमें आप माइमेक्टमी करोगे। ये पेशेंट है, इसको 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई है लास्ट, एंड द फाइब्रॉइड्स probably developed during the last 6 years because her last child was born 6 years ago, and unfortunately she is so busy with both of them कि वो उससे उसको फुर्सत ही नहीं मिलती कि और बच्चे का वो सोचे भी, तो वो हो सकता है कहे कि जी मैं नहीं बच्चा चाहती हूँ, अगर वो बच्चा और नहीं चाहती तो would you do myomectomy or would you do hysterectomy? So आपकी जो बहस है सारी बात जो है वो इस पे होनी चाहिए कि वो आपने हिस्टेरेक्टमी करनी है या वो आपने वो करनी है, और पेशेंट खुद कहेगी। सर मैं 3-4 चीजों के जवाब देना चाहती हूँ। This is a good point that for ultrasound you have to ask the size and number of fibroids and also to look at the cavity of the uterus. Fertility desire है कि नहीं ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको किधर लेके जाए। Then your question, TVS should be done. The answer is yes. TSH not required unless there are any symptoms. ठीक है जी।
अब आ जाए uterine artery embolization not to be done in multiple fibroids, it is only for solitary fibroid. ठीक है? Multiple में कर सकते हो, but Multiple में in results are this poor. particular patient there was a large submucous fibroid projecting into the uterine cavity, और वो उसके साथ वो कितना effective होता है या नहीं होता. And if you are talking about uterine artery embolization, you must know that it can also result in ovarian failure. So you have to select your patients very very carefully. चलो जी, सर what इसको is तो the फर्टिलिटी management इशू choice है for ना, तो us? सर यूएई तो हम इसको ऑफर नहीं करेंगे ना, इसको तो फर्टिलिटी इशू है मतलब कि तो यूएई तो ऑफर नहीं करेंगे इसको. ये आप सुफियान ने पे hysterectomy if no desire to preserve uterus मैं and 36 साल वाली की hysterectomy नहीं करूँ. Fertility desire है या नहीं है? I will not do hysterectomy in a 36-year-old girl. बोलना पड़ता है. Ma'am, if fertility is desired, then I have to prefer the myomectomy. According to my, then a patient is concerned regarding some point. After myomectomy, there are 40 to 60% chances of the pregnancy, and there are 30 to 50% chances of recurrence of the fibroid after myomectomy, and chances of persistence of amenorrhea after myomectomy is 1 to 5%. And risk of leptotomy after myomectomy is 20 to 25%. बस नहीं ये हो गया ये अब चलो इनको एक सिर्फ बात में एक पॉइंट सिर्फ रेज करना है. When there is a patient with multiple fibroid, you must always try to evaluate for fibroid in the uterine cavity, which means a polyp as well. So आपकी history, आपका examination, आपकी investigation उसकी तरफ जानी चाहिए. And I would like you to talk about hysteroscopy in this patient before you go for a myomectomy. अच्छा ये उन्होंने ये कहा कि प्लीज लेट द कैंडिडेट टॉक आस्क क्वेश्चंस एट एंड. ये सही है. वो कैंडिडेट को हम इसलिए इंटरप्ट कर रहे थे कि कैंडिडेट ने जरा ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था और टाइम कम था. हाँ अच्छा अब दूसरी बात ये है कि एक मिनट हम डॉक्टर रुबीना ने कहा कि जी ये हिस्टेरेक्टमी नहीं करेंगी इन अ 36-year-old वुमन. इन्होंने ये कहा लेकिन इस पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है. दिस इज इंटरेस्टिंग. आई टोटली कंप्लीटली एग्री विद प्रोफेसर रुबीना इन दैट के 36 इयर्स पे हिस्टेरेक्टमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैरीड आउट दैट हिस्टेरेक्टमी. अब उसकी वजह ये थी द पेशेंट वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एंड दिस वाज हर रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू डू अवे विद इट. आई डोंट वांट टू बी involved in this because she was a pediatrician, FCPS pediatrician, this patient. तो वो उनकी रिक्वेस्ट पे ये हिस्टेरेक्टमी की गई थी. बट आई टोटली एग्री विद प्रोफेसर रुबीना के at the age of 36 years hysterectomy should be done extremely reluctantly and on persistence of the patient after having explained to her all the implications. And main implication of that, of course, is in addition to loss of reproductive function forever, that is the deleterious effect on the ovarian function. कि वो ओवरी का फंक्शन जो अभी 20 साल probably होना है वो उसको आप to some extent shorten कर देंगे. That may not, the ovaries may not be functioning for the for that duration और उनका फंक्शन पहले खत्म. सर इसमें पहले मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट लेंगे क्योंकि पेशेंट की फर्टिलिटी डिजायर्स हैं एंड देन फिर उसकी जो है ना सर्जिकल ऑप्शंस मायोमेक्टमी वो करेंगे. इस एक्चुअली तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट काफी कुछ ले चुकी थी जब वो आई थी, तो उन्होंने वैसे भी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव ही नहीं जब होगा. खास तौर पे ये मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा सकता लेकिन आई डोंट नो मैं शायद दिखा ही दूं इनकी यूट्रस की That's not medical. Fibroid को medical करवा treatment मतलब या ट्रांसफर इमरजेंसी में जरूरत होती है. पेशेंट आपके पास आएंगे. मैडम आपका पेशेंट शिफ्ट हो गया और सर का रिकॉर्डिंग में नॉर्मल रिकॉर्डिंग है सारा भी. The role of GnRH in this particular case, I don't think there is much role of GnRH, Sufyan, because what will GnRH do? It will suppress the cycle. You cannot give GnRH for more than a couple of months.
because of the menopausal effect. So there is no point in giving GnRH unless you just want to give it temporarily. इस particular case में भी GnRH का कोई खास role नहीं. Role of HRT after hysterectomy, there she might be given hormone replacement therapy if needed. ये कैमरा है लगा वहाँ पे? हाँ, वो नहीं पता चलता. ये आप देख सकते हो, ये फाइब्रॉइड अगर है, ये थी इनकी यूट्रस, ये सबम्यूकस फाइब्रॉइड है बड़ा सारा. ठीक है, चलिए. सर इस पेशेंट में अगर हिस्टेरेक्टमी को जस्टिफाई करना होगा तो हम क्या पॉइंट्स बताएंगे? सर अगर हम इस पेशेंट में हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करें? Hysterectomy, the patient came with a request for hysterectomy, or you can explain to her the implications of hysterectomy और ये सारा कुछ और वो करके तो. But if the patient in such circumstances insists and she is sensible enough, in your opinion, to understand the implications, and you explain to her all that, तो वो जो है वो आप फिर I think that it is, I found it to be justified in I am a conservative surgeon वैसे I suppose, and I like to think that I am conservative and I not jump onto this kind of, this is a kind of radical procedure for her. Radical in the sense that it takes away the uterus, which has this such important function. चलो जी, ठीक है. Okay. See you next Wednesday. Thank you, sir. हाँ है और मैं तो और